Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में एंड दैट इज अरे ट्रैवर्सल बाय यूजिंग पॉइंटर्स. अब तक के सेशन में वी हैव सीन लाइक व्हाट इज द नीड ऑफ अरे, उसके लाइफ साइकिल के स्टेजेस, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड यूज, एंड देन वी हैव सीन लाइक व्हाट इज द वे थ्रू विच वी कैन परफॉर्म सम अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर्स. अभी बेसिक्स ऑफ अरे एंड पॉइंटर अरिथमेटिक दोनों को यूज करके अरे को ट्रैवर्स कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर ये देखेंगे. एंड दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट एंड जिसको आगे जाके स्ट्रिंग के साथ भी बहुत बार हम लोग यूज करने वाले हैं. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन ट्रैवर्सिंग अरेज विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स. So as usual, we are back into the VS Code, and in this pointers and CPP, I'll be creating new files, and that is array traversal, right? .c. And what I'm going to do is ये कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, right? Okay. Now let's go on declaring one array, and declaration के साथ ही उसको initialize करेंगे. And what I'm going to do in this case is here we'll go with integer key, and यहाँ पे with the help of curly brace pair I will keep some elements into it, right? Okay, so this is declaration and उसी के साथ उसका initialization भी किया है. Now इस array को हम लोग print करेंगे, traverse करके print करेंगे with the help of what? Pointers, right? Now according to the fundamental discussion we know that when we go on declaring and initializing array like this, उसका pictorial representation क्या है? पॉइंटर के केसेस में, अरेज के केसेस में, आगे जाके स्ट्रिंग के केस में, once you get to know how pictorially it can be represented, then your working with respect to that code and logic development will be more and more easy. तो इस केस में हम लोगों के पास 5 एलिमेंट्स हैं, right? Okay, and those elements are 1 1 2 2 3 3 4 4 and 5 5, right? Okay, the name given to the array is key and indices are 0 1 2 3 and 4, right? इंडेक्स के साथ हम लोगों ने उसको हैंडल कर लिया. इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव सीन लाइक हाउ टू मैनेज एंड हैंडल द अरे विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इंडाइसेस. अभी जब हम लोग इसके एड्रेसेस के बारे में बात करेंगे, दिस इज 100. वन लोकेशन और वन एलिमेंट ऑफ द इंटीजर टाइप इज गोइंग टू यूज व्हाट? 4 लोकेशंस इन द मेमोरी. सो दिस बिकम्स 104 108 then 112 and 116, right? And these are what? Addresses. Now we know that pointer is an entity which goes on handling what? Everything with the help of addresses. अगर किसी चीज का एड्रेस को आपको स्टोर करना है तो you have one option, that is what? Pointer. तो मुझे अभी इस अरे को ट्रैवल करना है not with the help of indices but with the help of what? Addresses. And अरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस is known as what? Base address, right? डेफिनेटली मुझे फर्स्ट एलिमेंट से अगर शुरू करना है तो बेस एड्रेस को किसी पॉइंटर में मूव करना पड़ेगा, राइट? कि जो अरे है वो किस टाइप का अरे है? दैट इज ऑफ टाइप इंटीजर. सो इसको ट्रैवल करने के लिए आई एम इन नीड ऑफ इंटीजर पॉइंटर. सो फॉर एग्जांपल हियर आई गो विद डिक्लेरेशन लाइक इंटीजर स्टार IPTR एंड इसमें इसका बेस एड्रेस को मूव करना है, राइट? नेम ऑफ द अरे इज की, उसका फर्स्ट एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 0. तो इसका अगर मुझे एड्रेस चाहिए तो हाउ आई एम गोइंग टू मेंशन इट एज IPTR इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ की ऑफ 0, राइट? रीडिंग ध्यान से सुनना है. IPTR इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ की ऑफ 0. की अरे के 0th इंडेक्स के एलिमेंट का एड्रेस मैंने मूव कर दिया किसमें? IPTR में. एंड नाउ आई कैन से लाइक हियर this particular IPTR starts pointing to IPTR is holding what? 100, and this IPTR starts pointing to this particular element, that is element at index number 0, और आप उसको array का पहला element भी कह सकते हो. Now through this IPTR I need to go on traveling this array and I need to go on printing 11 22 33 44 55 like that, right? Okay, उसके बारे में बात करेंगे रिवर्स ट्रैवर्सल कैसे करना है. So let's move into the
coding part, how we can achieve this, right? So in this case, what I need is, यहाँ पे आगे जाके I'll just go on saying integer star IPTR, and यहाँ पे IPTR is equal to address of key of 0, right? Okay. Once I mention this address of key of 0, first element ka address comes into what? IPTR. So I can comment here that IPTR holds what? Base address of array, right? Okay. Now इसके थ्रू मुझे अरे को ट्रैवल करना है, राइट? नाउ इंडाइसेस को यूज नहीं करेंगे, पॉइंटर को यूज करके ट्रैवर्सल को देखना है. सो वी नीड a for loop definitely, because we want to go on working on the same code multiple times. So here I'll go with integer I is equal to 0, और I को आप 1 से भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, बट जब इंडाइसेस के साथ आपको इसको मैनेज करना है तो यू मस्ट स्टार्ट दिस लूप वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? 0 ओनली, राइट? यहाँ पे आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड यू कैन गो विद I must be less than or equal to what? 5 and I plus plus, right? 5 times आपको ये अचीव करना है. Now how we can go on printing the elements? तो इसके पहले I'll just go on keeping the message as array elements are, right? Okay, and यहाँ पे print करेंगे, and I want to print it in digit format, and यहाँ पे I'll go with IPTR, right? Okay. So जब भी हम लोग वेरिएबल का नाम यूज करते हैं तो बॉक्स के अंदर देखना है IPTR is holding the address of this, and value at address of key of 0 is 11 in this case. So it should go on printing this, right? After that, नेक्स्ट इटरेशन में मुझे 11 को नहीं प्रिंट करना है, मुझे उसके नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है, राइट? सो आई वांट दिस IPTR टू पॉइंट टू व्हाट? नेक्स्ट एलिमेंट, एंड ये अचीव कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ IPTR प्लस प्लस, एंड यहाँ पे पॉइंटर के अरिथमेटिक काम करेंगे. जब आप किसी पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट करते हो तो इट विल गेट इंक्रीमेंटेड बाय मेमोरी लोकेशन सो दैट इट कैन पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट टाइप. सो जब भी आप इस IPTR को इंक्रीमेंट करते हो इंटीजर पॉइंटर होने की वजह से दिस विल गेट इंक्रीमेंटेड बाय 4 इन दिस केस, एंड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट एलिमेंट विच इज 22. तो चेक करते हैं ये यहाँ पे हो पा रहा है या नहीं, राइट? ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सो यहाँ पे there is a typo error, हाँ, सेव करते हैं, and we'll go on executing this code. And please observe that array elements are 11, 22, 33, 44 and 55. So in this case it's very clean and clear that we are asking this IPTR to point to the base address, and then pointer arithmetic को use करके मैंने उसको travel कर दिया in forward directions. Now if I want to travel it in reverse direction, can we do that, right? उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं. तो इस केस में when we go on thinking about printing it in reverse order, how we can do that? तो यहाँ पे I'm just considering when I go with this particular array, right, starting address is 100, next will be 104, 108, 112 and 116. जब मुझे इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो आई मस्ट आस्क दिस IPTR टू पॉइंट टू दिस, राइट? जब मैं ऐसे करता हूं एम्परसेंड ऑफ की ऑफ 0, राइट, एंड एड्रेस ऑफ की ऑफ 0, जब हम लोग मूव करते हैं IPTR में तो IPTR starts holding this base address, right? Okay. Now we know that this is at 0th index, first index, second index, third index and fourth index, right? So अगर मुझे 116 को IPTR के अंदर लेना है तो how I can do that? And very simple from the pictorial representation that इस index पे जो element है उसका address मुझे IPTR में चाहिए. तो कैसे कर सकते हैं? Instead of working on index number 0, I need to work on index number 4, right? So I'll do on something like IPTR address of key of 4, and इस केस में IPTR will start pointing to this element, and उसके बाद मुझे इस array को ट्रैवर्स करना है रिवर्स डायरेक्शन में, राइट? जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए आई एम यूजिंग IPTR प्लस प्लस, यू कैन गेस
रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू? यस, डेफिनेटली वी नीड टू गो ऑन डिक्रीमेंटिंग द पॉइंटर. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं या नहीं, राइट? So very interesting game along with the pictorial representation. So let's see like how we can print the array in reverse order, right? So यहाँ पे what I'll do is इस printf में what I'm going to do is array elements in reverse order, right? And यहाँ पे for I'll go with integer I is equal to 0, I must be less than और लेस देन 5 कर सकते हैं, और यहाँ पे 1 से भी शुरू करो. यहाँ पे I का केयर सिर्फ 5 एलिमेंट्स का काउंट को करने के लिए करना है. वी आर नॉट वर्किंग इट एज इंडेक्स, राइट? ओके, एंड यहाँ पे I'll go with less than or equal to what? 5 and then I plus plus, right? Now, okay. Now in this case what do I need is सबसे पहले मुझे इस IPTR को पॉइंट करवाना पड़ेगा लास्ट एलिमेंट को, राइट? सो कैसे करेंगे? एड्रेस ऑफ की ऑफ व्हाट? 4, राइट? एंड देन विल प्रिंट द एलिमेंट पॉइंटेड बाय दैट, एंड यहाँ पे %d स्पेस के साथ कॉमा करके वैल्यू पॉइंटेड बाय IPTR, राइट? एंड उसके बाद IPTR को माइनस माइनस करेंगे. ये प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, दैट इज पॉइंटर अरिथमेटिक, इज वेरी वाइटल इन दिस केस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग दिस, राइट? अदरवाइज ये अगर हम लोगों ने नहीं किया तो दिस इज गोइंग टू प्रिंट द लास्ट एलिमेंट 5 टाइम्स. लेट मी शो यू दैट आल्सो, राइट? तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा. सो इफ आई गो ऑन रनिंग दिस, I could be able to see this 5, 5, 5, 5, 5, 5 times, because this pointer will keep on pointing to the same element. So उसको decrement करना पड़ेगा so that it can point to the previous element. उसको एक बार और decrement करेंगे तो previous element. ऐसे करते करते ये 0th index के element तक printing करेगा, right? So यहाँ पे will go on working as IPTR minus minus, right? Okay, and let's go on executing this. And this is how I can traverse the array in forward direction as well as in reverse direction with the help of what? Pointers, right? So this is a very nice way to check out and mix the two concepts of array basics and pointer arithmetic so that we can go on traveling the array with the help of pointers, right? Okay, यहाँ पे point करवाया पहले base address को, यहाँ पे point करवाया पहले last address को, and then we keep on traversing this particular array. इस सेशन में इतना ही रखते हैं. ये कोड जरूर आपके मशीन के ऊपर करके देखना है. अगर कोई एरर आता है तो प्लीज डू पोस्ट द एरर ऑन माय व्हाट्सएप. I'll come up with error resolution, right? So that's it for this session. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.